Hello students, today we are going to start three-dimensional geometry of class 11th. First of all, we have already studied about the two-dimensional geometry in class 10th. Two-dimensional geometry means in which we have studied about x-axis and y-axis and in a plane. So now we study three-dimensional geometry. Three-dimensional geometry, we can say that included three coordinate axes: x-axis, y-axis and z-axis. So let us suppose this one is the directed line x-axis, this one is the second directed line, this one is called y-axis, and suppose this one is the third directed line z, this one is called z-axis. We can say that this x-axis, completely x-axis is this one, completely y-axis is this one, and this one is in this direction. So we can say that this point is x dash and this point is y dash and this point as z dash. So their point of intersection is denoted by O. So in these three coordinate axes, we can say that let x o x dash, y o y dash and z o z dash be three directed perpendicular straight line. Be three mutually perpendicular directed straight lines. Intersecting at O. Then O. O is called origin. This O is called origin. So their point of intersection of the three mutually perpendicular straight lines, this one is called x-axis, y-axis and z-axis. तो यहाँ पर तीन परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, तो दिस O point is called origin and this one is the fixed point. So first is, in this figure, x o dash x is called x-axis and y o y dash is called y-axis. Third is z o z dash is called z-axis. So these are the three coordinate axes. Now we study about the coordinate plane. In this figure, so secondly we can study about the coordinate planes. Coordinate planes. That is a plane containing the plane containing first x-axis and y-axis. X-axis and y-axis is called XY plane.
So let us suppose this one is the x-axis, this one is the y-axis. So a plane, that is this portion, जिस पर x-axis और y-axis जिस plane को बना रहे हैं, तो ये portion जो है, this one is called xy plane. तो इस वाले portion को हम कहेंगे xy plane. Now, second is the plane containing y-axis and z-axis is called yz plane. So this is a y-axis, this one is the z-axis. तो इसको जो plane contain कर रहा है, this one is called yz plane. तो इस वाले portion को हम कहेंगे yz plane. Third one is a plane containing z-axis and x-axis is called zx plane. Means this one is x-axis, y-axis, so a plane formed by the x-axis and the z-axis is called zx plane. इसको हम कहेंगे zx plane. In this case, the plane fourth, the planes x or y, that is xy plane formed by x-axis, y-axis including origin. So this one is called XOY. Plane y or z and plane z or x are called coordinate planes. Are called coordinate planes. So this one is the three-dimensional geometry. Once again, there are the three coordinate axes, x-axis, y-axis and z-axis. So these three coordinate axes containing three mutually perpendicular lines. So this one is called three-dimensional geometry. X O X dash is called x-axis, y O Y dash is called y-axis, or z or z dash is called z-axis. And in this case, there are the three planes. A plane formed by the x-axis and y-axis is called xy plane. A plane formed by the y-axis and z-axis is called yz plane. A plane formed by the z-axis and x-axis is called zx plane. So let us suppose there is a room. अगर रूम के अंदर हम तीन वॉल को कंसीडर करें, so two adjacent wall are xy plane and yz plane, and the floor of the room act as the zx plane. तो रूम भी क्या है, थ्री डायमेंशनल है. अगर रूम के दो एडजेसेंट आप सरफेसेस को यूज करें, तो सपोज करिए वाई एक्सिस, तो ये जो वॉल है ये होगी वाई एक्स वाई प्लेन, ये जो वॉल है ये वॉल कहलाएगा वाई जेड प्लेन, और जो रूम का जो फ्लोर है या जो सीलिंग है वो कहलाता है जेड एक्स प्लेन. तो दिस वन इज द थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. नाउ वी कंसिडर अगेन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर करेंगे. सो नेक्स्ट इज what are the coordinate of the points in three dimensional geometries. So let us suppose this one is the x axis, y axis and z axis. This one is the origin. Suppose there is a figure, or we can say there is a box.
तो these are the three coordinate axes. यहां पर अगर हम एक बॉक्स या क्यूब या क्यूबॉइड कंसीडर करें तो the one vertex of the cube lie at the origin and the one corner of this cube lie at x-axis. The second corner of this cube lie on y-axis at point B and the third corner of this cube lie on z-axis at point C. There is a point P which lie in space. एक यहां पर P कॉर्नर होगा इसका जो किस में लाई करेगा, स्पेस में. तो this one is P point in space. Suppose this one is Q, this one is R or this one is S. So in three-dimensional geometry we consider this figure. Let us suppose there is a cubical box or cuboid. We have put the cuboid in such a manner that the one edge of the cube are lie on the x-axis, second on y-axis, third on z-axis. So one end of the cube, one vertex of the cube lie at origin, other at x-axis, one is on b-axis, third on z-axis or b on y-axis. And there is a one point which lie in space. So अगर यहाँ पे कंसिडर करें तो three corner of this, let us suppose three नहीं more four, तो four corner of this cube or cuboid lie on the coordinate axis, that is one at x-axis, second at y-axis, third at z-axis and fourth at origin. So four vertices lie at the coordinate axis and one vertex in space. Next is this cube vertex lie in xy plane. तो क्यूब वर्टेक्स इसका आ जाता है xy प्लेन पर. R vertex lie in yz plane and S vertex lie in zx plane. So four vertices lie on the coordinate axis, three vertices lie on the coordinate planes and one vertex lie in the space. So in this case, this one is, let us suppose this one is a cuboid. So we consider that the coordinate of the point P which lie in space are as x, y and z. Suppose coordinate of this point is x, y and z. So according to the coordinate of this point P, we can say that x is directed distance of point P from YZ plane. So we can define this coordinate of P point are x, y and z. So we can define x as the directed distance of P point from the YZ plane. YZ plane is this one. इसका मतलब है जो x है ये डिस्टेंस है P पॉइंट की YZ प्लेन से x. Similarly y is directed distance of point P from ZX plane and Z is directed distance of point P from XY plane. So we can define the coordinate x, y, z of the point P as P is the directed distance or perpendicular distance from the xy plane, YZ plane, sorry. Y is the perpendicular distance or directed distance from the XZ plane, or Z is the directed distance of point P from the XY plane. Now, if we consider about the coordinate of the remaining vertices, so we know that the coordinate of the origin are always 0, 0, 0.
बिकॉज दिस इज अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट यहां पर 0 0 0. Then coordinate of this point A will be as x 0 and 0. We can say that the coordinate of y coordinate or x coordinate on the y coordinate and z coordinate on x axis will be 0. So coordinate of the point A are x 0 0. Now coordinate of B point will be as 0 y and 0. That is, on y axis the x coordinate and z coordinate will be 0. And coordinate of C point are 0 0 and z. So we can say that on z axis the x coordinate or y coordinate will be 0. So these are the coordinate of the vertices which lie on the coordinate axis, that is origin 0 0 0. Coordinate of vertex A which lie on x axis are x 0 0. Coordinate of the vertex B which lie on y axis are 0 y 0, or coordinate of the C point which lie on the z axis are 0 0 and z. Now what are the coordinate of the point Q which lie on the xy plane x y and 0? That is, on xy plane the z coordinate of the point will be 0. And this point R on yz plane, so coordinate of this point R will be 0 y and z. तो xy plane yz plane पर x coordinate 0 होगा. And this x point lie on zx plane, so coordinate of this point will be as x 0 and z. So ये टोटल सिस्टम हम यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 वर्टेक्सेस होते हैं प्लेन पर, Q पॉइंट वर्टेक्स, R वर्टेक्स, S वर्टेक्स. एक वर्टेक्स होगा स्पेस में, 4 वर्टेक्स होंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर O, A, B एंड C. If the coordinate of the point P are x, y and z, so coordinate of the point which lie on x axis are x 0 0. Coordinate of B point which lie on y axis will be 0 y 0, and coordinate of the C point which lie on z axis are 0 0 and z. Because Q, R and S 3 points lie on the plane, so xy plane पर जो point lie कर रहा है coordinate x y and 0, and coordinate of R point which lie on the yz plane will be 0 y z, or the coordinate of the plane which lie on zx plane x 0 and z. So this one is the 3-dimensional geometry or introductory 3-dimensional geometry. अब जो भी वर्कआउट करना है वो हमें इसी फिगर के अंदर करना है. अगर यहां पर आप 3-dimensional ज्योमेट्री के अंदर कंसीडर करें तो यहां पर हमारे पास 8 ऑक्टेंट्स भी बनते हैं. तो octants, there are the 8 octants. So 3 coordinate plane directed the space into the geometry are called octant. That is, अगर हम यहां पर एक प्लेन ये ड्रॉ करें अबाउट या अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली प्लेन. Second plane, this one is the about y axis, and third plane, suppose हमने एक थर्ड प्लेन जो z एक्सिस के अलोंग हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा हम इस तरीके से दिखा सकते हैं. तो अगर आपके पास यहां पर कोई भी 3-डायमेंशनल फिगर है, एक प्लेन आपने रखा हॉरिजॉन्टल, एक प्लेन आपने रखा वर्टिकल, और एक प्लेन आपने किया इस डायरेक्शन में. सो वन प्लेन, सेकंड प्लेन और दिस वन. तो अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो यहां पर हमारे पास 8 पोर्शंस आएंगे. 8 पोर्शन का मतलब है एक पोर्शन इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, और जो इसको डिवाइड कर रहा है 1, इसके पीछे 2 3 4. तो अगर इसके ऊपर की बात करें तो यहां पर 4 पोर्शन हमें मिले, 4 पोर्शन हमें नीचे मिल रहे हैं.
तो इन्हीं 8 प्रोपोर्शंस को हम कहते हैं ऑक्टेंट्स। तो यही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। इसी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने कुछ चीजें कंसीडर करनी है और स्टडी करनी है। तो इसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो हमें स्टडी क्या क्या करना है, तो इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें स्टडी करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस फॉर्मूला in 3-dimensional geometry. We have applied the distance formula in 2-dimensional geometry already in class 10th. So first is distance formula. Let us suppose there is a line segment lie in space. 3-dimensional geometry means suppose we have tied a thread with the 2 ends in 2 hands. हमने किसी भी थ्रेड को टाई अप किया हुआ है और ये हमने एयर में इसको टाइट करके पकड़ा हुआ है। तो जो इस थ्रेड से जो स्ट्रेट लाइन बन रही है इसी को हम कहेंगे दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और इन स्पेस। सो सिमिलरली लेट अस सपोज वी हैव ए लाइन सेगमेंट AB in space. The coordinate of ends are given as x1, y1, z1 and x2, y2 and z2. तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने कोई भी एक स्ट्रेट रॉड ली हुई है जिसको हमने स्पेस में पकड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और अगर हमने उसके एंड्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास है तो वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रॉड AB or we can also calculate the distance between AB by the distance formula. So we can calculate AB as under the root x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square and z2 minus z1 whole square. So this is the distance formula in 3-dimensional geometry. सबसे पहला हमने स्टडी यही करना है कि हाउ विल यू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 एंड्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट आर गिवन एज x1 y1 z1 x2 y2 z2. तो फर्स्ट, सेकेंडली वी स्टडी अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. सेक्शन फॉर्मूला. So there are the 2 types of the section formula. One is internally. One is internally. What is the meaning of the section formula by in internally? Means we have a line segment in space with the ends coordinate are x1, y1, z1 and B coordinate x2, y2 and z2. If we want to divide this line segment into 2 parts in given ratio, let us suppose we want to divide this line segment at point C into 2 parts in m/n internally. We want to divide this line segment into 2 parts internally at point C in m/n. So given that AC ratio CB should be equal to m/n. तो हमारा क्वेश्चन यहां पर यह है कि we have a line segment with the ends coordinate. We want to divide this line segment internally into 2 parts in such a way that the ratio of AC and CB ratio m/n. So section formula provide us the coordinate of the point C at which we want to divide this line segment. जिस पॉइंट से हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं उस पॉइंट के हमें ये कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करेगा सेक्शन फॉर्मूला. सो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, coordinate of point C are as mx2 nx1 m plus n.
my2 ny1 m plus n, mz2 nz1 upon m plus n. Whereas we have already applied this section formula for two-dimensional geometry in class 10. Now we will use this section formula, same section formula in three-dimensional geometry. So एंड के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, सी पॉइंट से आपने इस लाइन को सेगमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, m रेशो n में डिवाइड करना है. तो वी कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी बाय द सेक्शन फॉर्मूला एज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n और mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n. With the help of this section formula, we can calculate the coordinate of the midpoints. So, if C is midpoint of AB, अगर ये C पॉइंट इसका मिड पॉइंट बन जाता है तो then m ratio n will be as 1:1. If AC is equal to CB, because C is the midpoint of AB, so AC becomes equal to CB. So ratio of AC and CB is equal to 1:1. So we can put m is equal to 1 and n is equal to 1 in this formula. So we get 1 into x2, 1 into x1 upon 1 plus 1, 1 into y2 plus 1 into y1 upon 1 plus 1 and 1 into z2 plus 1 into z1 upon 1 plus 1. So coordinate of C will be as x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2 or z1 plus z2 by 2. And this one is called coordinate of midpoints. Coordinate of midpoint. So with the help of this section formula, we can calculate the coordinate of the midpoint if the ratio become as 1:1, 2:2, 3:3. तो मिड पॉइंट सी हो जाएगा. तो उसकी हेल्प से आप कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 और z1 प्लस z2 बाई 2. तो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनली. इन प्रोसीडिंग नाउ वी यूज दिस सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नली. So we are saying there is a section formula for externally, but practically externally section formula is not possible. We are saying that this one is the externally, but practically it is not externally. So we consider the section formula for externally. Second is section formula for externally. So for this, let us suppose we have a line segment AB with the coordinate of the ends are x1, y1, z1 and x2, y2, z2. We want to divide this line segment externally, but it is not possible because अगर ये लाइन एक्सटर्नली यहां पर है ही नहीं तो हम इसको डिवाइड कैसे करें. तो कहते हैं एक्सटर्नली है, बट मीनिंग होता है कि प्रोसीड या प्रोड्यूस दिस लाइन सेगमेंट अप टू पॉइंट सी, जिसको हम कहते हैं कि दिस वन इज द एक्सटर्नली. बोलते एक्सटर्नली है लेकिन मतलब यह है कि प्रोड्यूस द लाइन ए बी अप टू द पॉइंट सी इन सच ए वे दैट द रेशो AC ratio BC is m ratio n. यानी सिंपल मतलब ये हुआ, सिंपली मीनिंग ये हुआ कि आप एक लाइन को प्रोड्यूस करें अप टू द पॉइंट C इन सच ए वे दैट
the length of whole line to the length of the external extended part should be equal to m ratio n. तो इसका मतलब यही हुआ कि उस लाइन को आप इतना एक्सटेंड करें कि इस पूरी लाइन की लेंथ और एक्सटेंडेड पार्ट की लेंथ का जो रेशो है वो m रेशो n रहे। तो इसका मतलब यहां पर हमेशा ये आ जाता है कि m इज ग्रेटर देन n। अगर हम ये कह रहे हैं कि AC रेशो BC तो m हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा n से। तो दिस सेक्शन फॉर्मूला यहां पर भी आप ये लगा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि मीनिंग आपको समझ आना चाहिए, जिसको हम एक्सटर्नली बोलते एक्सटर्नली है, लेकिन उसका मतलब होता है कि एक्सटेंड द लाइन अप टू द पॉइंट C in such a way that the ratio of the whole length to the extended length should be is the given ratio or given should be as the m ratio n. So in this process m is always greater than n. So coordinate of the point B आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Now by the section formula we can calculate the coordinate of C. Coordinate of point C are as mx2 minus nx1 upon m minus n and my2 minus ny1 upon m minus n and mz2 minus nz1 upon m minus n. So these are the coordinate of the point C at which we have extended the line segment AB up to the point C in such a way that the ratio of AC to BC is m ratio n. But if m is greater than n, लेकिन अगर m की वैल्यू सपोज करिए गिवन रेशो, यहां पर हमें गिवन रेशो आ जाता है 2:3, तो अगर इसके फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो 2:3 तो पॉसिबल नहीं है कि होल लेंथ 2 आ जाए और एक्सटेंडेड पार्ट का रेशो 3 आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इफ m इज ग्रेटर देन n के लिए ये एप्लीकेबल है, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर दूसरे केस में इफ n इज ग्रेटर देन m, अगर एक्सटेंडेड पार्ट की लेंथ ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा आ रही है, होल लेंथ से ज्यादा आती है, तो उस केस में टेक n एज माइनस n। अगर n इज ग्रेटर देन m है और एक्सटर्नली का केस है, तो उस केस में जब हम न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकली हम n को क्या ले लेंगे, माइनस n लेंगे, इसका साइन चेंज। इफ फॉर एग्जांपल if given that 2:3 or this is the ratio for externally, so when we apply the formula for the section formula to find out the coordinate of C, so यहां पर प्रैक्टिकली हम लेंगे this one is m is 2 but n is -3। so ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर यहां पर m रेशो n greater than m greater than n है, तो this formula is applicable, directly we can use this formula। but in case of externally, if n is greater than m, so in numerical problem the value of the n will be changed from positive to negative। so practically formula आपने ये यूज करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसके अंदर, चैप्टर के अंदर, वो है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो नेक्स्ट इज आर्टिकल इज सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल मीन्स सेंटर ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो नेक्स्ट इज सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। in 3-dimensional. So let us suppose we have a triangle ABC.
A, B and C. In three-dimensional geometry, let us suppose coordinate of point vertex are A, x1, y1 and z1. Coordinate of the vertex B are x2, y2 and z2. And coordinate of vertex C are x3, y3 and z3. So, suppose this one is a triangle in three-dimensional geometry. We want to find out the coordinate of the centroid of this triangle. So, we know that the centroid of a triangle is the point of intersection of its median. किसी भी ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो उसकी मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. सो लेट अस सपोज दिस वन इज द वन मीडियन AD. So we have drawn the median, three medians. So one median is AD. Second median is BE. And third median is CF. We know that किसी भी तरह का ट्राइंगल है, अगर हम उसकी मीडियंस ड्रॉ करते हैं तो बिकॉज वी नो दैट द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. तो मीडियन किसी भी टाइप के ट्राइंगल की हो वो हमेशा एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जो ये आपको मिलता है, सपोज करिए दिस पॉइंट इज R, इसी को हम कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल. सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल. तो इसी के कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करने. नाउ नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी इज दैट द medians of a triangle always bisect to each other, divide to each other in 2:1. ये भी एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है. इन केस ऑफ ए ट्राइंगल जो मीडियंस होती है वो एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती हैं. तो ये 2:1, दिस वन इज 2:1, दिस वन इज 2:1. तो यहां पर हमने यही लिखा है, लेट AD, BE एंड CF आर थ्री मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC. If AD, BE or CF are three medians, so we know that median always bisects the opposite side. So we can say that simply one median consider करेंगे AD. So we can say that D is midpoint of BC. अगर ये इसकी मीडियन है तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा और बाइसेक्ट करेगा तो D is called midpoint. तो D midpoint होगा BC का. So with the help of the midpoint formula, we can calculate the coordinate of D point. So first of all, find the coordinate of point D. Coordinate of point D by using x2 plus x3 by 2, y2 plus y3 by 2 and z2 plus z3 by 2. Because we know that the coordinate of the midpoint of a line segment x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2 and z1 plus z2 by 2. So by using the midpoint formula, we have calculated the coordinate of the point D as x1 plus x2 by 2, that is x2 plus x3 by 2, y2 plus y3 by 2 or z2 plus z3 by 2. Now, once again consider this one is the line segment AD. अब हम अलग से ले रहे हैं ये AD. कोऑर्डिनेट आपको इसके गिवन है x1, y1, z1 और D के कोऑर्डिनेट अभी हमने कैलकुलेट किए x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2 और z2 प्लस z3 बाई 2. So these are the calculated coordinate of the point D from this. Now we want to find out the coordinate of the point R and the ratio of this is given as or known as 2:1. So on line segment AD,
We know that AR ratio RD is equal to 2:1. तो एक्चुअल में यहां पर अगर हम इसको अलग से कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पर सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. This 2 act as M, this 1 act as N, these are as X1, Y1 or Z1, or these are as X2, Y2 and Z2. So this one we have considered the line segment AD and coordinate of the ends are X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 and the ratio is AR ratio RD 2:1 is given. So we can apply the section formula. So by section formula. Coordinate of D are mx2 nx1 upon m plus n, my2 ny1 upon m plus n, mz2 and z1 upon m plus n. तो यहां पर हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी आर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक m as 2, m x2, x2 is x2 plus x3 by 2 plus n is 1 or x3 as x1 upon 2 plus 1. Once again, m is 2, x2 is x2 plus x3 by 2 plus n is 1 or x1 is x1. Secondly, my2, m is 2, y2 is y2 plus y3 by 2, n is 1 or y1 is y1 upon 2 plus 1. And third is mz2, m is 2, z2 is Z2 plus Z3 by 2, 1 or into Z1 or 2 plus 1. So simply इस फॉर्मूले में हमने m n x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और ये सारी की सारी वैल्यूज हमने पुट की है. तो m is 2 और x1 मैंने x2 मैंने लिया है x2 plus x3 by 2, 1 plus x1 और upon m plus n. तो सिमिलरली when we calculate this, so 2 cancel by this 2, this 2 cancel by this 2, this cancel by 2. So we get the coordinate of D point as x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3 और z1 plus z2 plus z3 by 3. So these are the coordinates of the centroid of a triangle. So these are the coordinate of the centroid of a triangle as x1 x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3, z1 plus z2 plus z3 by 3, where x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 are the coordinate of the vertices of a triangle. So यही सारा का सारा 3D हमने स्टडी करना है और 11th में भी हमारा ये इंट्रोडक्टरी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है. तो at the glance we use the distance formula and we use the section formula for internally and externally both, and we use the coordinate of the midpoints, and next is the centroid of the triangle. So we will discuss the numerical exercise of this chapter in the next period or next lecture. Thank you. Goodbye.